हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर न्यू वीडियोस आउट। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम योर साइड, बट दिस विल हेल्प अस ग्रो। So membrane transport proteins related to active and passive transport. Okay, related to active and passive transport. So एक introduction and important points about this active and passive transport हमने already discuss किया है, right? If you have not watched, please first watch that video and then come to this video so that it will be easy. So membrane transport protein में there are types, okay, important types, three types we can say. First is channels, okay, channels, transporters and ATP powered pumps, right? ATP powered pumps. अभी जो channel है, the channel basically gate होता है इसमें, एक gate which will open and the molecules will pass, right? This is basically a passive transport, okay, passive transport. So this is a vast topic, बहुत vast topic है, हम इसे easy करेंगे and very important things I will tell you, okay? These are very important for the exams like CSIR, DBT, ICMR, etc. right? पैसिव ट्रांसपोर्ट में चैनल्स आते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टर्स, इसमें यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा, ओके, यूनिपोर्ट मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिमपोर्ट मीन्स टू मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड इन द सेम डायरेक्शन, राइट? यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, सेम डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द सिमपोर्टर. Importer is a transporter which will transport the molecule in the same direction. एक जो होगा that will be high to low and एक जो होगा that will be low to high. Okay, means एक molecule का होगा passive transport and एक का होगा active. Okay, antiporter में there is opposite transport. मतलब एक molecule down जा रहा है high to low and the next molecule is coming up from low to high. ओके, तो यहाँ पे सिमपोर्टर में सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, एंटीपोर्टर में अपोजिट डायरेक्शन, राइट? द थर्ड टाइप दैट इज एटीपी पावर्ड पंप्स। हमने देखा है एटीपी को यूज करके जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, so this is active transport. Okay, active transport using ATP हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम साइटोसोल टू एक्सटीरियर. दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू. अभी जो ट्रांसपोर्टर है, सेकेंड ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स को हम कैरियर्स भी बोलते हैं, कैरियर्स, राइट? दिस इज आइदर पैसिव और एक्टिव, एनीथिंग कैन हैपन, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आइदर पैसिव और एक्टिव. चैनल्स पैसिव है एंड एटीपी पावर्ड पंप्स एक्टिव है, पर जो ट्रांसपोर्टर है, कैरियर्स है, आइदर पैसिव और ट्रांसपोर्ट. गॉट इट? ट्रांसपोर्ट.
One more picture again of this transporter and channel protein. तो ट्रांसपोर्टर जो है दिस इज इसका जो कॉन्फर्मेशन है वो चेंज होता है. ओके, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर व्हाट इट डज, changes conformation. Either open or close. मतलब कॉन्फर्मेशन मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें होते हैं एंड दैट इज हाउ इट ट्रांसपोर्ट्स द मॉलिक्यूल. यू कैन सी हियर हाउ इज द ट्रांसपोर्ट ऑकरिंग हियर लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूट बाइंड होगा फर्स्ट. यू कैन सी हियर सॉल्यूट बाइंडिंग साइड ओपन स्ट्रक्चर है यहाँ पे. तो द सॉल्यूट विल बाइंड, बाइंड होने के बाद यहाँ से क्लोज होगा. यू कैन सी हियर क्लोज हुआ, ऊपर से हुआ ओपन एंड that is how it will release the solute. Okay, बट चैनल प्रोटीन का वैसे नहीं है. चैनल प्रोटीन ये पोर फॉर्मिंग होते हैं, राइट, पोर फॉर्मिंग और वी कैन से गैप जंक्शन. गैप जंक्शन मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा डायरेक्टली. यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर. ओके, सी इन द फर्स्ट पिक्चर वी सॉ जो चैनल प्रोटीन है दैट इज ऑल्सो गेटेड, राइट, गेट होता है इसमें भी, राइट. सी वी डिस्कस दिस प्रीवियसली. यूनिपोर्ट, सिंगल डायरेक्शन एंड कपल ट्रांसपोर्ट में टाइप है सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट. सिम्पोर्ट मीन्स सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे मेन होता है ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल एंड कपल ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल के साथ साथ होता है को ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल. ओके, को ट्रांसपोर्ट, राइट, इसका होगा. वन मोर थिंग नोट हियर, तो ये चैनल प्रोटीन है, इसमें देयर इज नो कन्फर्मेशनल चेंज, राइट, नो कन्फर्मेशनल, नो कन्फर्मेशनल चेंज. बस यहाँ पे गेट हो सकता है which will get open and molecules will pass. So it is very logical that this will do the transport fast, right, fast transport यहाँ पे होगा and this will do a slow transport, slow transport. Okay, easy. This is a, we can say, types of protein: channel, transporter and ATP powered pumps. अभी हम चैनल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल प्रोटीन. Channel protein. Okay, basically we call it channels also. So channels में there are types: water channels which will transport the water and ion channels. Okay, water channels also called as aquaporine. Pore forming होते हैं which will transport the water, aquaporines, right. Ion channels transport ions. इसमें भी types है again, right. You can see here from the picture, this is a gate which is closed. When it is open, the molecule can pass. Okay,
यहाँ पे सिलेक्टिविटी फिल्टर एक है. व्हाट इज दिस सिलेक्टिविटी फिल्टर? इज यहाँ पे बाइंडिंग होगी ऑफ द आयॉन्स, राइट, एंड इट इज स्पेसिफिक टू सम आयॉन्स up to some extent, thus it is called a selectivity filter. यहाँ पे बाइंडिंग होगी of the ions which are to be transported, and then the gate will open, molecule will pass. Got it? Now this is a type of ion channels. You can see these are types. Ion channels types. Okay. So voltage gated में the change in voltage results in transport. From the name only you can understand. Ligand gated, there are types: extracellular ligand and intracellular ligand. Ligand अगर extracellular bind होगा, that is extracellular ligand, and then the gate will open. First you can see gate closed है. When there is change in the voltage, see here there is plus, now it is minus, and here it is plus. Okay, so changes हो रहे हैं membrane potential में, right? Voltage is related to potential. Okay, so you can see here there is change in voltage which will lead to opening of the gate. Close से open होगा. Second type ligand. When ligand will get bind here, gate will be open, right? यहाँ पे इंट्रासेलुलर लिगेंड है, मतलब सेल के अंदर है, इन द साइटोसोल. ओके, लास्ट स्टेप इज द मैकेनिकली गेटेड. मैकेनिकली गेटेड मीन्स यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस और स्टिमुलस is important for the gate to open. What is mechanical stress or stimulus basically? This is environmental stimulus which can be temperature, pressure, right, sound, smell, touch, right. This is a mechanical stimulus. इसकी वजह से जो सेंसेशन जो हमें what we can say impulse देता है, that is how occurs here. Right. So ion channels, there are types: voltage gated, ligand gated, and mechanical. Ligand gated में again there are types: extracellular, intracellular. Okay, like this how you can make your own notes. Now one more thing you have to remember of this ligand channel, very important. I will write down. There is one example to remember: acetylcholine receptor. Okay, or we can say cholinergic. Cholinergic. बहुत बार इसके क्वेश्चन आए हैं, right? As I said, I am focusing more on important things. Okay, so this is very important point. Acetylcholine receptor is basically, इसमें types है. There are two types: nicotinic and muscarinic. Okay, इसमें जो ligand है that is nicotine. This is a ligand. and इसमें muscarine. This is a ligand.
ना ये जो मस्क्यूरिनिक है ना, दिस इज अ जीपीसीआर, ओके, जीपीसीआर। एंड जो निकोटिनिक है, दिस इज अ ligand gated cation channel, ligand gated cation channel, right? This you have to remember. Ligand gated cation channel means what? Cation means what? पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट? K plus, Na plus, okay? And muscarinic is also called as metabotropic, metabotropic. इसमें कैटायंस क्या क्या है? That also I will write here. Na plus, K plus, and Ca2 plus. Sodium, potassium, calcium. Right? These are positively charged ions. So this is very important when we are studying ligand gated channel. As I said, you have to remember this channel proteins और जो channels है, that is restricted to only passive transport, right? Only passive transport होगा channels से, that is high to low, down the concentration gradient, right? Now the next type is carriers, right, or transporters or carriers. As I said, these are either involved in passive transport or active transport, right? इसमें क्या होता है? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। पहले एक साइड से गेट ओपन होगा, राइट? व्हेन सॉल्यूट हैज टू बी एंटर्ड, व्हेन सॉल्यूट इज एंटर्ड, गेट इज क्लोज्ड, ओके? एंड उसके बाद अपोजिट साइड का गेट ओपन होगा, विच विल ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल इनसाइड, राइट? एंड दिस स्टेटस, जो इंटरमीडिएट स्टेट है, दैट इज कॉल्ड ऑक्लूडेड, ओके? ऑक्लूडेड मतलब टाइट पैक किया है सॉल्यूट को अंदर लेने के बाद, एंड देन द नेक्स्ट कन्फर्मेशन चेंज विल टेक प्लेस, ओके? So there is structural change here. First important point, conformational change. First open to take the molecule, right? जहाँ से ओपन हुआ है क्लोज होगा from that side, and then opens from the opposite side, okay? मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर से ये क्लोज होगा, ओके? So you can see here concentration gradient high to low है. So this is again in the picture they have shown passive transport, but this is not restricted to only passive transport. Either passive होगा या active भी हो सकता है. This is an important graph, right? Transporter mediated diffusion, you can see V max when the speed is fast, right? Max.
जो सिंपल डिफ्यूजन है एंड चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ट्रांसपोर्ट होगा कंटिन्यूस, बट जो ट्रांसपोर्टर मीडिएटेड है आफ्टर रीचिंग वी मैक्स यहाँ पे स्टॉप होगा। यू कैन सी दिस रेड लाइन, एक सर्टन अमाउंट पे रीच होने के बाद दिस गेट्स लिमिटेड। हमने देखा है एक्टिव पैसिव के वीडियो में देयर इज लिमिटेशन, राइट? तो दिस इज अ लिमिटेशन, मतलब एक अमाउंट रीच होने के बाद दिस विल गेट स्टॉप अप टू एन एक्सटेंट। इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, उसमें भी हमने देखा है। So this is about passive transport. Okay, we will keep this video for passive transport only. Right? Active transport की जो specific चीजें हैं that we will discuss in the next video. Okay, now let's discuss some important examples. You have to remember, right? जो important examples है, examples of channel mediated transport. Okay, channel mediated transport के हम example देखेंगे. First of all, first is porine. These are pore forming proteins, right? Okay, and when pore is formed, through that pore the molecules are transported, right? Second is aquaporine. पोरिन्स में टाइप है एक्वापोरिन, वाटर चैनल है, वाटर चैनल। okay, we know these porins are beta barrel, right? Beta barrel, you have to remember this also, beta barrel structure. okay, पोरिन्स में ही एक्वापोरिन विच इज अ वाटर चैनल, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। okay, next example is examples of carrier mediated transport. okay, passive we are talking, not active, right? There is one example only, glucose transporter. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में भी देयर टाइप्स, एक्चुअली 2 टाइप्स है, HCLT एंड GLUT, glutes. HGLTs and glutes. This is sodium glucose transporter, okay, and this is glucose transporter. Basically ये जो है this comes under active transport, and this glutes comes under facilitated diffusion. okay, glutes come under facilitated diffusion, जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेंगे and maintain the glucose level, right? Inside different glutes maybe there are types, there are various types, right? But I am not going in that much detail. I am covering basic things, right? And introduction is it, which is this is also very important. You can see lot of questions are asked from this also. तो बहुत रिपीटेशन हमें देखने मिला है इन सिंपल चीज़ों से भी। There are more things to study in detail, but if you focus in this things also, right? तो डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं
Those are, when you go in that much detail, you forget the basic things. But I think that you should focus on basic things, introduction, overview, ये सब में बहुत important होता है. Okay? And इससे direct questions जो आते हैं, that you can answer. Okay? So here we are limiting only of the passive things, right? As a overview हमने starting में देखा, proteins which are involved in active, passive दोनों discuss किए हैं. और जो detailing है, that we have discussed of passive only in this video with examples and which are important, right? In this जो examples हमने discuss किए हैं, those are very important when you are studying. Okay? In the next video, we will continue with the active things, right? So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.